Suraj Singh, international professional engineer, India. Back to you regarding state of affairs of our country, Bharat, India, and particularly to Jammu and Kashmir, which is a boiling and turbulent state. Currently in 2019, there are many other issues in this nation, but this is very significant issue currently. Significant in sense that a phase of this state of this state Kashmir has been passing in a way it should not have passed. It should have been avoided. Bharat, India, a great nation, of course, has been and is and shall remain great nation under ambit of India shall continue to be, and we have to respect that. There are many states in this country, and Jammu and Kashmir areas are very significant from our strategic point of view. What we have done to them in 2019, what government has caused to them, what nation has caused to them, and what people of this country have caused to them are not acceptable facts. I don't regard them that this public of country, government of country, and nation as an overall should not have done what they have done. We have very serious, terrible, confrontative situation there in Jammu and Kashmir, particularly Kashmir, which is called heaven on earth, has virtually been converted to hell on earth. Hell I am calling because I think hell may be better than what Kashmir is now. You may call me that I am speaking against my country. It's not question of speaking against your country. Question is facts should be clear, should be talked, should be deliberated, and if you miss that, if you avoid that intentionally, you cut your legs, you cut your feet. Truth always remains truth. It cannot be covered by false statements. And I don't believe in false statements. You had to do something, you could do that, but accordingly in a way that it should have been done. We missed a lot. First of all, we have done something to that state which should not have been done in a legal way. They had nothing special, they had nothing extraordinary. That law, which misconception again and again I have explained to people, but people are not ready to listen. People other than Kashmir people, if you talk to them, they don't even know what is happening in Kashmir. They don't even realize problems, plights these Kashmiris have been facing for more than 45 days. Unfortunately, our country's population, non-Kashmiri people, they are not clear about what is happening there because they are not getting real news about that area. We are getting all fake news through government and through channels. Whatever news are coming in are by those videos which are being published by people or journalists or someone else who have visited that area recently. And unfortunate that Bharat as a country, Bharat as government of this country, and Bharat as court of this country have acted in a manner unbecoming to status of Bharat as UNO member. We are UNO member. We were non-aligned member also one time, but we have not valued our world status. Our world status is not because of Prime Minister
or because of president or because of Supreme Court. Our world status is because of public of this country, because of constitution of this country, and because of standards we maintained since we got independence in 1947. Our constitution is a grand document. It's a grand document that makes our identity, that reveals our identity and projects that to whole world. Our identity has been indented. Our identity has been tainted, and I feel shy of that. That I, as a citizen of this country, got an identity of being called Bharatiya or Indian. That identity has been tainted by our government because of its ill-thought acts. Every government has right to do what this government did, but every government has a duty also to contemplate prior to doing something what impacts that action would procure in. That is very important and significant from governance point of view, but our government got no such mental potential to pre-understand and pre-see and foresee what could be consequential results of whatever actions are being taken and had been taken. Our government did not understand anything but just to show to political power, to show to public that we promise you something and we are fulfilling that, so please vote us. That was tacit statement passed by government and parliament to people of this country and people of whole world. Means you took some action regarding which you made no analysis, you made no understanding, you could not even grasp situation, but you did something which you could avoid. Question is not that what they did shall kill them or shall not kill them. That's not a question here. 370 article of Constitution of India has nothing to do with what has been happening there. 370's existence or non-existence doesn't make a difference to state of Jammu and Kashmir or now so-called Union Territory Jammu and Kashmir. It shall not make any difference to them because already they have been covered. It is just a diluted article already done, but this government could not understand that. This government failed to go through all documents of historical arrangements with this state in relation to that. They did not even check number of documents and whatever correlations existed among those documents regarding integrity of that nation, that state to ours. It's really unfortunate that we got a government who got no succession, who got no understanding how to construct and interpret documents. Well, this has nothing to say now because it's all been done. But what is happening there is a big question mark. First question is, why do rest of India not know about what is happening there? Why our people, 135 crore people, do not understand that something wrong has been transpired in respecting that state? Are we not having our brains? Why we don't realize that something wrong has gone there? Those people have been suffering. Why don't we realize this? If same thing happens to us, what reaction shall we generate? Why don't we know that? Why are we so sleepy, sloppy people that we don't realize others' problems? I am calling others because they are others now. They were ours when we loved them. We threw them from our glass as if they were not required. Our government did something which they could not even know what they were doing. They put them under combat, political combat, army combat, as if they were anti-nationals, they were rebellions, they were all terrorists. Our government considered them all terrorists in virtual status, and they jailed them in Kashmir as whole, 1 crore public nearly of that area. Yes, you removed Article 370, you reorganize the state, those are your issues, those are constitutional issues and national issues. But question is,
What about their living conditions? What about their absence of communications from one person to another person? What about their living rights and right to liberty, right to life, which has been granted and empowered and ensured by Constitution of this country to each citizen of this country? Question arises, had those people been considered human beings or they have not been considered human beings? If they had been considered human beings by government and by public, why were they extended such ill treatment still they have been observing, they have been subject to? We call them our people, we call them our integrity area. If they are integrated area to our nation, what action has been taken against them? Under what rule? Under what law? Why more than 40,000 people, as latest reports speak, have were arrested in addition to certain political leaders? Why whole public was imprisoned and still they are in prison? I even heard in some videos that they removed curfew, they lifted curfew in some areas, but shops did not open because these people are not interested in opening shops except for 1 hour or 2 hour a day. They are not interested to run their state because they are depressed now, they have been shocked and they don't trust this country. They have lost trust on us. They say that we don't care about 370, forget that, and we don't care of something. But care is, are we not human beings? Why we were not asked? Why we were not discussed? Why no consultancy were taken from us? Whether we wanted whatever action they did was right or wrong, or they had to do something. They could have asked our assembly. They should have conducted election, call assembly, or they should constitute constituent assembly. They are right in that sense. They must have been consulted, but our government thought we are honest and they acted in a dictatorial way and did without consultancy, which is usual habit of this government. Such type of actions are taken by kids, just like Modi did. I consider Modi as a kid also now because he acted in a way a kid acts, kids the primary school acts. Who cannot even cannot think about what is he doing, what boy is doing or girl is doing. That KG boy cannot think, or primary boy cannot think, because that boy has not, that student has got no analytical potential. But as nation, we cannot accept this. If there's a prime minister or there's a government, they are expected to be well matured and pragmatic, and they should use their pragmatic potential to solve problems and not just buy because my heart says and my conscience says do it. That is wrong approach adopted by government of this country. This approach is very dangerous. It is actually like a gun, like a cannon. You may call it your approach because you are not honor of all citizens of this country. You are just a prime minister or government, small government. You have no right to decide on behalf of people. People shall decide for themselves. So you acted in a way as if you are only your way can do. Others are not required to be consulted, and this does not apply everywhere. People cannot be ruled by like this. People can be ruled for few days, for temporarily, for few days by under suppression. But once their suppression is over, once their scarce degree of, you can say, a scarcity or degree of, the threat is over, these people comes open and fights with you. What to do in that case? It is question of 1 crore people. You have suppressed them as if they were animals. You have suppressed them as if they were bacteria. You consider them bacteria, I am sure. Oh, we will do what they can do. They cannot nothing. The contemplation like that appeared in your mind, and you just took action. We will look after that and see what the ever hell they can do. They are just a small people, and we are ruler of this country, and we snatch this land from them, and we will see what they do. We will beat them, we will starve them, and we will not allow them food and stay, and they will die automatically. This type of dirty thought might have come into minds of governors.
governors in sense of government, prime minister and all who are related to this action. You change law, okay, you had power, you change law. But is law change enough? We have to consider this important and significant point. If you change law of someone, is that adequate? Is that sufficient? What you have done? Can law change minds of people? Can law solve problems on itself? Law is made by 800 people. That's it. 800 MPs. 800 MPs cannot solve problems of 130 crores people. Remember, law is just law, a piece of paper. It cannot be implemented if people are not interested in implementing that. An example is Vehicle Act. You can see a burning example, a firing example, an explosive example where all results coming negative. People are not happy with that law. Police is also earning money on that law. People are beating police since such is the result of this law. Means government did not think on that law before designing that law. They did not consult with public, they did not consult with people, they did not consult with opposition, they did not consult with anybody, they just enacted what they wanted to enact it. This means this is same thing a child does, a kid does. Here also it is evident that Prime Minister acted like king, just like it acted in Kashmir issue. Prime Minister acted like king in demonetization of currency. Prime Minister acted like kid in GST issue. And whatever actions they have taken, they acted like kids. Government of India was a kid, Prime Minister was a kid, and every even president was a kid. So kiddish approach cannot solve problems. These kids have caused this problem, but they are not competent enough to solve that, and it is sure. They are not well managed, they don't have minds to solve that. Had they minds, they would not have caused this problem. Problem has been caused, but solutions have to come from whatever source. If government is not able to solve, minister is not able to solve, then public is ultimate honor of whatever is the country, and Kashmir public shall solve themselves because they have to solve. This is their problem. They have to resolve similarly like all other areas do in their states. Government has caused a problem. Government has no solution. Had they got solution, by now they would have done it. Still, these people are under open jail. Solution is first of all that we have to take into our consideration gravity of this situation. What we are being watched under international eyes, we have to take that into consideration. What is UN thinking about us? What is Europe Union thinking about us? What is the Gulf thinking about us? What Far East thinking about us? We have to consider all these political issues, international issues. Otherwise, we cannot be considered a country. There are issues everywhere in the whole world. We understand there are issues, but issues are issues. Issues need solutions, and people have to solve. People means these governments have to solve, and when governments fail, either it is in a whole country, it is uprising, or people take laws into their hands. People have taken laws in some areas and consider some vehicle act. They are imposing unlimited fines, and people have started questioning police and started beating them. They, in some cases, police were not following law, they were not abiding by law and traffic, and police say, you challan yourself. You challan your constable. He is not having helmet. His car is having tinted glass. He has no documents. Challenge him, check him, examine him, and then fine him. If question becomes when public is so angry, they question police. This means something is wrong somewhere, and government is silent, as if government is busy in meditation, yoga. Our country, that is why I say, is passing through very turbulent phase, very unpleasant phase, which can lead to far distant problems. It's not one day solution or 2 day solution. We know this Kashmir issue had been pending for long, but pending in what sense? There's nothing but pending. They were integral part of us.
It was unfortunate that those who changed this law did not go through that paper. They did not go through all papers, they just decided verbally we will do this and did that. This appears from this. Because there is no coordination among documents. It's not seen that that coordinational activity was conducted while considering all legal documents in relation to Jammu and Kashmir. Nobody checked into that, nobody looked into that, and they didn't deserve to look into that. They say, well, we know everything and we'll do that. And once somebody says, I am everything and I do that, I know everything, this means luck of that thing has gone. It is people of this country. First of all, we have to see everybody has human right. I am having right, you are having a right, irrespective of Kashmir, no Kashmir. Everybody has human right, and you have to use your human right. Right to food, right to live, right to study, right to go to school, right to do work, right to do business. These are all human rights. But you suppress them just because you wanted to. You wanted to abrogate 370 just for this small work. You suppress those people with oppressive actions, with oppressive efforts. Who shall accept this? We are in Bharat, we are in world, young world. You can say it has crossed maybe its 19s, 20s. 20s might have been started. 20s might have been. Well, what I am talking now is very, very simple way. How long shall we keep Kashmiris like this? There have been some videos says that they tried to lift curfew in some areas, but it didn't work. People did not open shops. They talked to people, those guys who went take the whistle, and they say people were very angry. They were not angry for 370. They were not angry to be called integrated to India, Bharat. They are saying we don't care we are integrated or not integrated. We don't care about 370. Question is we have been cheated. That is a shock. Why were they cheated? Why have been cheated? Who has to answer that? Who cheated them? What cheated them? They did not consult us. They did not even try to obtain our views. They decided on their own. This means they did not consider us their people. This means we are not Bharat people, we are not Indian people. They consider separate. So we are separate. This is a thought created in mind. They consider terrorists, we are terrorists. Is it a small statement? We are terrorists. It's not a small statement. They are Kashmiris. They have been living in Kashmir. They know their problems. They know your solutions. But we are not telling our public what solutions are. I don't know through these channels the facts. I have to believe in foreign channels, and I believe in that case from whatever country it comes. So foreigners will never like ours. Ours are different, and foreigners means who are working in high positions, various states. Kashmir, heaven on earth, has been converted to hell on earth. We call it Kashmir. We say that this is our part, and I am happy with that. It is our part. If something is your part, it is your duty to keep up that part, to maintain that part, to value that part, to upgrade that part, but not by force. People are there, population is there, crores of people are there. If they like something, they should accept that. And if they don't like something, you need not say something. You don't even go to jobs. But not going to jobs shall solve problem. That is not a problem. How can that solve problem? Internationally, question is different. Very different question. And we are sorry that we don't have answer. Today, we cannot say loudly on world forums that we have done right thing.
We have done constitutionally in favor of people of Kashmir. We cannot do say. We are simply saying we have done their favor, we will develop that area. That is not an answer. Development of area is your responsibility. You cannot say because of this we shall develop. There is no such answer. There is no such acceptable statement. And because of Article 370 abrogation, you will develop that area. This means before that there was no development. Before there is no budgeting for that area. Every year there was budgeting. That is just a false statement. That's just the illuminizing statement. No, no, we will do that. Don't worry. Just to console people that we will be begging them to spend money on that. Fact is, they are not interested to spend money on that area. Then what? Israel, Palestine, America, Egypt. Israel, Palestine is a very, very continuous issue, have been for decades. Netanyahu elections are there now, have been over, and he is, I think, leaving seat of prime minister now. Obama left, American president. This president, Trump, with alliance of his son-in-law, has tried to buy Palestine. They try to buy the money by saying we'll develop your state, we'll provide this much and this much, and we'll provide bridges here and roads there and this here and that here. See, development is your job. They try to give a plan of 50 billion US dollars for development, and this is lifetime opportunity. They indirectly said, we spent $50 billion in this area, and you say, yes, Palestine is not yours. You don't have Palestine. Just as you wanted to purchase them. And this President Trump also tried to purchase Greenland. They failed. You see, why are you thinking you're big boss, you're God of this country? Why do you think that? You're God of universe. You can buy whatever you wish. God has given you money for some reason maybe, for some power maybe. But you are not realizing that you have been given this seat because of God, because of God effect. Why don't you realize that Kashmiris are also human beings? We have to realize. If you don't, you will do another mistake. They think so many ways. They are Muslims, Kashmiris. There's no meaning in the ministers or the MPs' minds. No meaning at all. You are a minister. You write your hands. You sign this. I have this. This all this. Unfortunately, I'm not going to repeat all documents which were there, but I would simply give a solution, and that is we have gone a long way. We have to correct our mistakes, we have to correct our leads. And that lead says withdraw your army from Kashmir, not from border area, from other areas. Who shall do that? Who has got that courage? If you don't have that courage, we will lose Kashmir. Kashmiris are angry and we have to cool them down. How to cool them down? When paper, newspaper can bring the facts or reason, why will be equated? First of all, we have to treat them in a friendly way. Other people, non-Kashmiris people, Delhi, Haryana, Punjab, all other state people should know facts first. Television channels did not tell, government did not tell. But I am telling you, that is a disturbed area, that is a turbulent area. They have been created in a way they should not be. We have to know it. These are facts.
that government concealed every information. Facts were hidden, and people they don't know what's going on there, what's going on there. But fact remains that we, as other states subjects and all other states subjects, have to understand it's not only in English written on Facebook, you can see in their language also. So better be pragmatic, be thoughtful. Don't think that your enemies or who know they are. Even if you don't like them, they are citizens of your country today until problem arises. These people who are handling them, these bathroom peoples, they have to decide themselves. And this isn't their time. And these think of that. Why we sleep? Why we people are sleeping? From this viewpoint, do we not have any duty to talk of these people, to talk on their behalf, to question government what way they have done? But we are not doing that. We are on other way happy that these people are being taught a lesson. And this thought, this contemplation is very dangerous for you and for us, for all. Really sorry. Why we thought I'm not sure about this. What was in mind of government? They thought they will keep them starving for a few weeks and then release them. And they have intensified. They have taken this problem to other direction. In that case, it is true. We have to change direction. If you can change that direction, that's fine. If you cannot change, war is coming soon, and we have to face it. It's the fair way. We people, when somebody goes to the decision, 25 people come. So we go outside, many people come to send you off from airport. Same thing here. If those people who don't want to run their businesses, 8,000 crores are being lost on because of fruits. There's a news. Those fruits which could be sold in this season are being lost. They are not interested to sell them. They are not interested to pick them. So that money is being lost. 8,000 crore about since this problem started. If this had started now, it would have been better because all these pump rooms are not working. Well, I'm not very excited to speak on this issue, but it is my duty as I thought, as I considered that people should know what's happening there. Government is concealing, but how long shall they conceal also? They cannot conceal forever. Yes, it is software age, it's hardware age, but you cannot rely on softwares. You have to check so many points. Well, I am very, very sorry to speak today, slowly, because my mind is very, very loose. I don't know why I feel so much. Maybe I'm too emotional or I'm sentimental. Maybe I cannot digest this problem because I'm a human being. Maybe you are more superhuman being and don't care for this problem. You know this problem. That's up to you. But I have seen workers in my life. I handled workers for many, many years. I know their problem. I know what are poor people, how they live, how they conduct. I always try to remain with those downtrodden people who need help of persons like me. But this government doesn't have that tendency. They are different people. They want to just catch your hold like this and pick you and down like that, pick you up and down. Such people are called devils. Such people are inhumans, and they belong to that category.
You may call it bad by calling him devil. Devil shall be called devil only. I'm calling in Hindi, I may call him shaitan as well. This should not happen, but it's happening. Happening because of you and me. And we should feel shame on this. I should be shameful on this issue. Why I'm not shameful, I don't know. Why you are not shameful, I don't know. Is Jammu and Kashmir land real estate, you think? You plan to build houses there, buy that land, enjoy those female there. Is it sensible? Are you cultured society? What is the difference between animal and your contemplation as such? You want to get land only. You want people less land. That can be won only in war. Kashmir, you did not buy it, first of all. You did not win it, first of all. You did not invade it. It came to you as an annexure, as an accessed area, and with some conditions. They came. You did not try to do all complete, fine, but how long shall you keep them like this? How long? 45 days are gone? 1 year? 2 years? How long? No solution? Who is responsible? When you did not have any solution, why did you start this journey? When you don't know where this track shall go, where this road shall go, you didn't know that. Yes. In flight, when people started saying there was something about Kejriwal, came yours. Solution is that you withdraw army from there. No need of army there now. Army is just causing problems rather than solving problems. 1 or 2% in this, all persons. If you can solve this problem, solve it. Don't wait. What for you are waiting? If government cannot solve, public has to solve. You raise your voices. Because don't earn more amity with those people. Don't create more contemplation in them that they are not yours. They are not yours, they have thought it because you did not help them. You did not raise your voice when it is required. You just thought let them die. If you think that let them die, then they are not your people. Remember. If you think that, let them die. They are human beings like you and me. If somebody thinks for me, let him die, how shall I feel? You have to realize that. Why should I die? What crime I have done? Of course I shall think that. But why are you thinking that only? Well, if you cannot solve it, you'll suffer. Today, it was normal Kashmir till 4th of August 2019. It is very normal. Yes, there were some incidents of terrorism. There are some other incidents. But rather, in place of solving that issue, you have created more complex problem. And maybe Prime Minister saying every year we want it or we did this. I don't accept that. Because what Prime Minister says is false in many cases. And I earn only 55%. I earn only 50%. Not only earn, look at process of moving. So, Kashmir should remain Kashmir, and it will remain Kashmir only when we love Kashmir. We love them, we respect them,
We love their videos. If there is no such solution, in that case, they have, a miraculous is going to happen. Well, you may say I'm all sitting very lie and closing my eyes in between. You may say. Because we are getting names from other countries, groups like European Union ordering us, asking us, change state, give back their rights. And speaking by, I know you know same thing as well. There's no place left in us to allow them stay with us. They cannot. If they continue with further supported, what's that? Better is remove army from there. Let them be free. Let them enjoy their life. Let us see reaction. They are going to throw bombs or they are going to shoot or they are going to let us see. Whatever energies, negative energies they have earned, they have taken from us, they absorb, let this come out. Otherwise, it is permanent problem, permanent. It cannot be resolved. They have to take out energies, bad energies, impurities from them, and you throw your important impure energy also, which you earn by practicing, practicing this what's called it. We have to, otherwise it's a problem, big problem. भारत के लोगों कश्मीर की बात सुनाता हूं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कितना जानते हैं मैं नहीं जानता। भारत का कश्मीर एक ऐसी जगह जिसको भारत में स्वर्ग कहा जाता है, जिसको इतना अच्छा कहा जाता था कि लोग वहां घूमने जाते थे टूर पर, टूरिस्ट की हैसियत से, सैलानियों की हैसियत से। वो कश्मीर आज आग में झुलसा हुआ है और हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि उस झुलसी हुई आग को बुझा दिया जाए। आग लगा दी किसी लगाने वाले ने, किसी छोटे बच्चे ने, जिसको पता नहीं था कि आग लगा होती कैसी। खेल खेल में लगा तो दी और उसको लगा के भागना पड़ा, तो समझ नहीं पाया वो कब तक हो गई। अब उस आग को कौन बुझाए? हमने उंगली डाल दी आग में, उंगली जल गई। अब वो उंगली को कैसे निकालें? क्या भारत के 130 करोड़ लोग जवाब देंगे? भारत के 130 करोड़ लोगों को मालूम है कि वहां क्या हो रहा है? अपनी मस्ती में जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, उनको क्या लेना देना कश्मीरियों से? बस जमीन चाहिए हमको मकान बनाने के लिए और वहां से लड़कियां लानी है शादी करने के लिए। यही सोच हमारे समाज की हो गई है, तो इस गंदी सोच का कोई इलाज नहीं। उनको आप चाहते नहीं, उनको आप अच्छे नहीं लगते, वो आपको अच्छे नहीं लगते। आपको जमीन चाहिए बस। क्यों चाहिए? आपके पास उत्तर नहीं है। हमारे वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है जी, इसलिए हम चाहते हैं। आप समझ तो लीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ किया, सरकार ने कुछ किया, आप उनके साथ खड़े हुए। आप समझते हैं प्रधानमंत्री सत्यवादी चंद्र है, पीछे से हरिश्चंद्र के खानदान से है। अरे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, राजनीति करते हैं लोग, सब जानते हैं, शायद जानते। देख लीजिए इसराइल में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, कितने बदमाश लोग हैं इसराइल वाले। आतंकवादी कहता हूं मैं उनको, आतंकवादी हैं वो।
हर रोज बच्चे को, छोटे को, बूढ़े को मारते रहते हैं। ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? वो अपना हक ना मांगे, अपनी जमीन ना मांगे। तुम्हारे बाप की जमीन है खाली, तुमने खरीदी, हम ऊपर से लाए हो। देख लो हाल उसका। नेतान्याहू एक नंबर का बदमाश, बच्चों को मारने वाला, औरतों को मरवाने वाला, गोलियां मरवाने वाला, सर फुड़वाने वाला उनका। ऐसे को आप प्रधानमंत्री कह सकेंगे? और वही हाल हमारे प्रधानमंत्री का हो गया, उससे ज्यादा। कोई फर्क नहीं है उसमें और उसमें। क्योंकि एक मैंने वादा किया था इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कि मैं 370 को हटाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं हटाऊंगा। उसके पीछे क्या है वो जानता भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। हटा दिया मैंने, आपका वायदा पूरा कर दिया। कश्मीर मिल गया मुझे हमारे देश में। अरे अनपढ़ गवार, पता तो कुछ है नहीं तुम्हें। किताब पढ़ के आई नहीं, कोई डिग्री तुम्हारे पास नहीं, कुछ समझते नहीं कि कानून क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। कह दिया हमने, मिला दिया भारत में। भारत में तो 1956 में मिल चुका था। अनपढ़ गवार अभी पहले पढ़ी है उसको। जवाहरलाल ने चुपचाप मिला दिया था, आपको बताया भी नहीं था, क्योंकि वो समझता था कि लोगों को इस बात समझ नहीं आएगी। कागजों में लिखा है 1954 में, 56 में 1956 में वो भारत का इंटीग्रल अंग बन चुका था। पढ़िए संविधान, हमारा नहीं, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का एक और संविधान है जो आपने कभी पढ़ा नहीं, आप पढ़ना जानते भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में है वो। आपको इंग्लिश में ABCD नहीं आती, आप पढ़ेंगे क्या उसको? सॉरी, अगर पढ़ते होते, समझे होते, तो ये बदतमीजी बच्चे वाला काम नहीं किए होते, मैच्योरिटी का काम किए होते। उन लोगों को बुला के बिठाते, उनसे बात करते, हिम्मत होती, मैच्योरिटी होती, प्रैग्मेटिज्म होता। लेकिन आप छोटे से बच्चे हैं, बात करना वरना आपके बस की बात नहीं है। होंगे आप 68-69 साल के, दिमाग से आप बच्चे हैं। जो आपने आज तक काम किए हैं वही के जो बच्चे करते हैं। उठाई रात रात में डिमोनेटाइजेशन कर दी, नोटबंदी कर दी, देखो मैंने क्या कर दिया। आज 12 बजे से नोट बंद हो गए हैं, देश खुशहाल हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कालाधन खत्म हो जाएगा, हम तरक्की के होंगे, साथों हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे हम। उठाई रात रात में, रात पार्लियामेंट बुलाई और रात को 12 बजे कानून बना दिया, GST लागू हो जाएगी। ये बच्चों का ही काम है, जो दिखाते ज्यादा है, करते कम है। समझ तो होती नहीं है, शोर करना। छोटे बच्चे क्लास में होते हैं, शोर मचाते हैं, पता होता नहीं हो क्या रहा है। किसने कहा ताली बजाओ, सबने ताली बजा दी। अस्पताल में छोटे बच्चे रोते हैं, एक रोएगा सारे रोएंगे। आपका वही हाल है। एक बच्चे ने कहा रो, आप सब रोने लगे। एक ने कहा हंसो, आप हंसने लगे। एक ने कहा 370 में हटा दी, हा हा हा, 370 हटा दी, 370 हटा दी, लड्डू खाओ। पागलों का देश, पागल लोग। भारत के साथ पागल ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए, ये पागलों का देश। जिस देश में बुद्धि ना हो, जिस देश में सोचने की शक्ति ना हो, उसे क्या कहते हैं? एक है ना अंधेर, अंधेर कौन सा है वो, अंधा राजा, अंधा अंधा, अरे पता नहीं क्या कहते हैं यार उसको, अंधेर कर दी चौपट राजा, अंधेर कर दी चौपट राजा। उसमें आप में कोई फर्क नहीं, शायद वो कुछ नीचे ही होगा आपसे। अंधेर कर दी चौपट राजा, टके से भाजी टके से आटा। हो गया भारत। यहाँ का युवा, पढ़ा लिखा युवा, कागज नहीं पढ़ना जानता। भारत का युवा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना जानता, तो कोशिश नहीं करता पढ़ने की। क्यों करें कोशिश? हम क्यों करें भाई कोशिश? हमें क्या जरूरत पड़ी है? हम तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं जी। हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम PhD हैं, हम MPhil हैं। पता नहीं कितने कितने डिग्री, मैंने तो सुनी है पहली बार। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, नमस्कार आपको, धन्यवाद, आप इतने पढ़े लिखे हैं। तो बताइए तो सही कुछ, आप क्या पढ़े हैं? बताइए मेरे भाई, बता तो दीजिए कुछ कि भारत किसको कहते हैं, संविधान क्या होता है, कुछ जानते हो? तो मेरे कोर्स में ये संविधान संविधान नहीं होता है, हम नहीं जानते इसको। अच्छा, इंग्लिश का सेंटेंस बता दीजिए। हमारे को ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाई, हम तो हिंदी मीडियम से आए हैं। अरे यार, आप हिंदी मीडियम से आए हो या आप अरबी मीडियम से आए हो, कुछ सीख के तो आए होगे। संविधान हमारी किताब में था नहीं, हमारे कोर्स में था नहीं। अरे कोर्स में आपके नहीं था तो आपको, आप डिग्री कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो आपका माइंड तो चलने लगा। माइंड के अंदर डिग्री के पहिए लग गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के पहिए लग गए, माइंड तो चलना चाहिए फटाफट। पर नहीं, क्योंकि आपकी आदत है, जो पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे।
तो मेरे भाई, दस्तावेज आप नहीं जानते, कानून आप नहीं जानते, पार्लियामेंट आप नहीं जानते, देश के बारे में आप नहीं जानते, और कह रहे 370 हटा दी। कभी संविधान खोल के पढ़ा 370 क्या होती है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ेंगे, आवश्यकता नहीं है। हम मोदी भक्त हैं, बस जो मोदी ने कह दिया ठीक है, बस खत्म बात। तुम बोलो मत तुम कांग्रेस के हो, तुम देशद्रोही हो, मोदी के खिलाफ बात करते हो, मोदी के खिलाफ। अरे वाह, तो मोदी के खिलाफ क्यों नहीं कर सकता बात में? मोदी के खिलाफ, मोदी का दोस्त वही बनेगा जो मोदी के खिलाफ बात करेगा। जो मोदी के खिलाफ बात करेगा देशभक्त वही होता है, और जो मोदी के साथ बात करता है ना, वो बेवकूफ होता है। उसका दिमाग अंधभक्त होता है, अंधभक्त भक्त नहीं है, अंधभक्त है वो, दिमाग में भी भूसा भरा है उसके। मोदी बेवकूफ है जो अंधभक्तों की खोज इकट्ठी की है उसने। अरे दिमागदार की खोज इकट्ठी करता था, कहां से कहां पहुंच जाता आज तक। लेकिन नहीं, अंधभक्त है वो खुद, बुद्धिहीन है वो खुद, इसलिए ऐसे काम किए उसने, बिना सोचे समझे। समझदार आदमी कभी बिना सोचे समझे काम नहीं करता है, लेकिन मोदी करता है, उसका बाप अहमद शाह करता है। और बीजेपी में तो कुछ है नहीं रेपिस्ट के अलावा। रेपिस्ट बीजेपी में, गुंडे बीजेपी में, लुटेरे बीजेपी में, चोर बीजेपी में, डकैत बीजेपी में। ऐसी कोई क्रिमिनल क्राइम, ऐसी कोई क्रांतिकारी आदमी है सारे जो ऐसी क्रांति करते हैं, जहाँ रेप हो, जहाँ गुंडागर्दी हो, जहाँ मर्डर हो, जहाँ लूट मार हो, जहाँ हफ्ते लेते हो, वो सारे काम बीजेपी वाले करते हैं, साधु के वेश में। सबके साफरन क्लॉथ, साफरन चुन्नियां, साफरन को बदनाम कर दिया। देखिए, राम को बदनाम कर दिया, कमाल है। राम जो किसी धर्म का नहीं, जो विश्व का मालिक है, जो विश्व का निर्माता है, जिसे कोई धर्म से लेना देना नहीं है, उसको बदनाम कर दिया। जैसे राम का पेटेंट इनके पास है, राम ने इनको साइन करके दिया कि मेरा डिजाइन राइट, मेरा पेटेंट आपके पास है, लो जी आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, बेवकूफों। भगवान का कोई धर्म नहीं होता। अगर भगवान का धर्म होता तो सृष्टि नहीं कहलाती, हिंदू सृष्टि कहलाती है, क्रिश्चियन सृष्टि कहलाती है, मुस्लिम सृष्टि कहलाती। भगवान किसी धर्म का नहीं होता। धर्म तो आपने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए। किसी को धर्म की जरूरत नहीं है दुनिया में, सब एक ही तरह आते हैं, एक ही तरह जाते हैं। भगवान ने एक ही डिजाइन किया मानव का, दो डिजाइन नहीं किए। आपको समझना चाहिए, भगवान ने सृष्टि एक ही बनाई है, अलग अलग नहीं बनाई। वही प्रोसीजर सबके साथ, आज से नहीं, सतयुग से, उससे भी पहले से लागू है। 9 महीने लगता है बच्चा बनने में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हर एक का। ये नहीं कि हिंदू का 9 महीने पैदा होता है, मुसलमान का 11 महीने पैदा होता है, और क्रिश्चियन का 15 महीने पैदा, ऐसा नहीं होता। पैर के बल सब चलते हैं, आंख से सब देखते हैं, खाते भी सब मुंह से हैं, कोई नाक से नहीं खाता, सुनते सब कान से हैं। सूरज सबका एक है, अलग अलग नहीं है। हिंदू का सूरज इधर से निकलता है, मुसलमान का इधर से निकलता है, सिख का इधर से निकलता है, ईसाई का इधर से निकलता है। ऐसा है क्या? हवा क्या अलग अलग आती है? हिंदू एरिया की हवा है, मुसलमान एरिया की हवा है, कॉमन सब जगह एक किया, एक ही लेता। कुत्ता भी उसी में सांस लेता है, बिल्ली भी उसी में लेती है, और आदमी भी उसी में लेता है, गाय भैंस भी उसी में लेती है। बरसात जब पड़ती है ना, ये नहीं देखती मैं हिंदू के ऊपर पड़ेगी, मुसलमान के ऊपर पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए। अस्पताल में खून की बोतल चढ़ी होती है, वो नहीं कहती मैं कौन से आई हूँ, हिंदू के मुसलमान से आई हूँ। लेकिन इन लोगों ने हिंदू मुसलमान की डेफिनेशन दे दी। इन्होंने, बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने, जिसका हेड मोदी है, देश को बता दिया कि समाज क्या है और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या है। भगवान ने किसी को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कभी नहीं बनाया, अपने आप लोगों ने बनाया। भगवान ने तो सत्य बनाया, सत्य। उसको राम नाम सत्य कह लो, या उसको क्रिश्चियन नाम सत्य कह लो, या उसको बुद्ध नाम सत्य कह लो, उसको सिख नाम सत्य कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि भगवान ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, मरना सबको है, एक दिन जाना ही पड़ेगा। राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता है, जब मरता है कोई, जीते हुए नहीं कहता कोई। देखिए कितनी गलत बात है। अरे राम नाम सत्य तो जीते हुए भी है, हर रोज है, सुबह से शाम तक राम नाम सत्य बोले। लेकिन नहीं बोलेंगे जब डर होता है, क्योंकि राम के नाम से डरते हैं, सत्य के नाम से डरते हैं, इसलिए नहीं बोलते। सब झूठ बोलते हैं, इसलिए सत्य नहीं बोलते दिन में। मरने के नाम, क्योंकि कुछ नहीं होगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी नहीं तो डंडा पड़ेगा। राम नाम सत्य तभी याद आता है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों की सोच में, जो हर समय बोलना चाहिए उसको उसी टाइम बोलते जब कोई मर जाता है। राम नाम सत्य, उसके अलावा सत्य नहीं है वो। अगर सत्य होता तो
आप गलत काम ही नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश के भक्त कहने वालों, पहले देश को समझ लो कि देश है क्या। पहले राष्ट्र को समझ लो, राष्ट्र भक्तियों वालों जो राष्ट्रवाद की बात करते हो, राष्ट्र की तुम्हें ABCD नहीं आती। तुम तो घुस गए हो राजनीति के चक्कर में, तुम घुस गए हो धर्मों के चक्कर में, तुम घुस गए हो जातियों के चक्कर में। जब तक इस चक्कर में फंसे रहोगे, ये एक सेप्टिक चक्कर है, एक सीवेज का चक्कर है, आपको समझ नहीं आएगा सच क्या है झूठ क्या है। ना आप कुछ लेके आए हो, याद रख लेना, ना कुछ लेके जाओगे। कृष्ण ने नहीं कहा ये सच है, कृष्ण कहता या नहीं कहता तब भी सच था, राम कहता है नहीं तब भी सच था। क्यों झगड़े करते हो आपस में? कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान कहता है उसका है, मेरा नहीं है। अरे कुछ किसी का नहीं है, यहाँ पे लेके जाओगे क्या? इंसान को तो इंसान समझते नहीं, मानव को मानव समझते नहीं। 45 दिन हो गए मर रहे हैं वो लोग, खाना पता नहीं उनके पास है कि नहीं है, हवा में सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आप खुश हो रहे हैं, क्या खुश हो रहे हैं? क्या कर दिया आपने? क्या दे दिया उनको या क्या ले लिया उनका? आपको क्या मिल गया? कभी सोचा? 130 करोड़ लोग उछल रहे हैं, ओ 370 हट गई, इनकी गरीबी हट गई, इनकी हेरा फेरी बदमाशी हट गई, इनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, देश राम राज्य आ गया, देश सोने की चिड़िया बन गया, सारी महंगाई हट गई, सारी इकोनॉमी डेवलपमेंट GDP 25% हो गई। यार पागलों की दुनिया है आपकी, समझ नहीं आ रहा आपको हुआ क्या? और शोर मचाने लग गए। दिवाली समझ बैठे जी, 370 दिवाली हम मना रहे हैं हम। पता भी है क्या हुआ था? कुछ पता तो है नहीं, बस उसने बोल दिया हाँ 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 हाँ। उसको तो वोट चाहिए, आपको क्या चाहिए? एक बात का सबसे पूछता हूँ, मोदी को वोट चाहिए और दूसरी पार्टियों को भी वोट चाहिए, पर पब्लिक को क्या चाहिए? क्या पब्लिक को वोट चाहिए? फिर किस बात के लिए खुश होते हैं? क्या किया ऐसा उसने? देश की हालत को भक्का कर दिया, चले गए समुद्र के नीचे बेसाल्टिक रॉक्स पे हमारा पूरा देश का अर्थशास्त्र चला गया, आग लग गई अर्थशास्त्र में, और लोगों को तंग करे और गाड़ियों को चलान में। जॉब नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, फैक्ट्री बंद, इंडस्ट्री बंद, रियल एस्टेट बंद, सड़क बंद, सब कुछ बंद, और खुश हो रहे हो 370 चल रही। अनपढ़ गंवार कहेंगे, हमारे पूर्वज अच्छे थे जो अनपढ़ तो थे, लेकिन इन जैसे गुंडों को उन्होंने नहीं चुना। 70 साल तक वो जानते थे इनकी आदतों को, वो इनकी हिस्ट्री को जानते थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते। हम इनके साफ रन कवर को जानते हैं, साधुओं को जानते हैं, बदमाशों को। सारे साधु एक नंबर के बदमाश, बाबा लुटेरे, करोड़ों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति इनके पास, सारे गंद काम करते हैं, साधु हैं। साधु का मतलब इनमें एक भी नहीं जानता। साधना कौन कर रहा है इनमें से? बताइए, सुट्टे लगा रहे हैं वो साधना है? कौन साधना कर रहा है इनमें से? कोई भी नहीं कर रहा। किस वक्त साधु है, चाहे वो कोई सा भी साधु हो आज आदमी, उसको देख लो, शंकराचार्य को मोटा पेट लेके बैठा हो, खड़ा नहीं हुआ जाता उससे। अरे साधु वैसे होते हैं, साधु साधना करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, प्रॉब्लम्स को पढ़ के सॉल्व करते हैं, समझते हैं। साधु ऐसे होते हैं। कृष्णा साधु था, राम साधु, सब साधु तो थे ही। और कौन थे ये पॉलिटिशियन थे क्या? इनको कोई लेना देना नहीं था, किसी इंटरेस्ट नहीं था इनको संपत्ति से, किसी और से। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी जब लोगों को रहा, वो होता है साधुपन। नीचे सोए फर्श पे, वो होता है साधुपन। आप बोलते हैं जय श्री राम, क्या होगा उसके बोलने से? उनके फॉलो करो, उनको जैसे वो करके गए वैसा करो तो सही, करके देखो तो सही। आप मानेंगे अपने माता पिता की बात, और हमने तो मानी, चाहे गलत मानी, गलत भी बात नहीं मानी, जंगलों में रहे आप रह लेंगे। आप राम को नहीं फॉलो कर रहे, बात करते हैं जय श्री राम, भगवान का मतलब जानते नहीं, जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। इस्लाम को जानते नहीं, लड़ाई कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी को जानते नहीं, लड़ाई कर रहे हैं। जानना कुछ नहीं, बस लड़ लो। पता नहीं कौन किसने जन्म में था पहले, पता नहीं कौन किधर जाएगा बाद में, लड़ लो। अरे कुछ पता तो कर लो, पहले सीख तो लो। पहले इन डिग्रियों से, डिग्री सिर्फ काम करने के लिए होती है, काम भी आपको कुछ नहीं आता, बस मचा लो। कोई मोदी भक्ति कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर बनवाएगा, कोई कुछ कराएगा, सारी जिंदगी इसी में निकाल दो। देश का क्या होगा? कुछ नहीं होगा देश का, कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे लोग अगर देश में रहेंगे, इसमें ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे, ऐसे ही होनहार, जैसे कह सकते हैं बेवकूफ होना। आज मैं जो कहता हूँ, जो मैं समझाऊं,
हमारे देश के बारे में, हमारे देश के लोग एक सोते हुए लोग हैं जिन्हें कोई चिंता नहीं। बच्चा सो जाता है, जैसे हम रात को सो जाते हैं, सोते वक्त तो कम से कम कोई चिंता नहीं होती, उसके बाद जाग जाएंगे तब सोचेंगे क्या करना है। अरे चिंता करोगे नहीं तो सोचोगे भी नहीं। जितना कम सोओगे उतना दिमाग ज्यादा चलेगा। ज्यादा सोने का मतलब दिमाग काम बंद। दिमाग की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो भी नहीं सो सकता है, क्योंकि दिमाग सोने वाला नहीं है, किसी का भी दिमाग काम करने वाला होता है। किसी का भी दिमाग सोता नहीं, याद रख लेना। आपका शरीर सोता है, दिमाग काम करता रहता है अपना। दिमाग बहुत बड़ी मशीन है, उसको इस्तेमाल आप नहीं करना जानते। आप कंप्यूटर तो यूज करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कंप्यूटर किसने बनाया। कंप्यूटर दिमाग नहीं बनाया था। कंप्यूटर तो बहुत छोटा चिप्स होता है हार्ड डिस्क में, ये दिमाग तो बहुत बड़ा है। इसकी जब ऑरा खुलती है, जब इसकी प्रोजेक्शन होती है, तो पूरे स्काई को भी कवर सकती है। आप तो कुछ नहीं है, आप समझते नहीं है। आप बैठे हैं नेताओं के चक्कर में, जो गुंडे हैं बदमाश सारे के सारे, उनके चक्कर में बैठे कि ये आपके देश को राम राज्य बना देंगे, ये आपके देश को आगे बढ़ा देंगे। उन्हें खुद कुछ आता नहीं है, क्या बढ़ाएंगे वो। देश को आगे आपने बढ़ाना है, अपने आने वालों के लिए, अपने लिए। ये कुछ नहीं करेंगे। अपने आप को समझो आप राजनीति कर रहे हैं, मत समझो कि मोदी राजनीति कर रहा है या कांग्रेस राजनीति कर रही है। उनका तो धंधा है, उनका तो बिजनेस है, उनकी तो दुकान है राजनीति की, उनकी रोटी इसी से चलती है। लेकिन आपकी रोटी राजनीति से चलने वाली नहीं, आपको तो काम करना पड़ेगा। तो क्यों इनके चक्कर में बैठे हो भाई? क्यों बैठे हो उनके चक्कर में? इनमें ऐसा क्या है, मेरे को बताइए। आपके वोट से ये राजनेता बनते हैं, अपनी ताकत से तो नहीं बनते, अपनी डिग्री से तो नहीं बनते, अपनी हाथ की काम से तो नहीं बनते, अपने दिन रात लेथ मशीन पे काम करते हो या फिर राजनीति करते हो, ऐसा तो नहीं है। इनमें ऐसा क्या है जो उनके पीछे आप भागते हो, जो आपके साथ नहीं है? आप दिन रात मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और करोगे, तब आप कुछ एक बनते हो लाइफ में। ये तो ऐसी आपने बनाई और इनके पीछे फिर भाग रहे हो। अरे किसी और को बना दो, फेंक दो उसको उठा के। आपको एक नौकर चाहिए देश को चलाने के लिए, तो किसी को बना सकते हैं। उसमें क्या मोदी और क्या राहुल और क्या कोई, भाड़ में गए सारे के सारे। हमें क्या लेना इनसे? खाना खा के अपने आप को एसोसिएट क्या हुआ है उनसे? आप देश के मालिक हो, फिर कह रहा हूं होश में आ जाओ। जब ये समझ नहीं सकते आप, तो देश को आप संभाल भी नहीं सकते। ये तो अपनी औकात में रहना है, इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। आपको तो पहचानेंगे भी नहीं आप कौन है क्या है, क्योंकि आप जानते नहीं इनको, वो जानते नहीं आपको। बस आप नाचते रहते हैं, वो नचवाते रहते हैं, वो लेकर डुडुडु करते रहते हैं, आप नाचते रहते हैं। वो जानते भी नहीं आप कौन है, कौन से बंदर है, कौन से कुत्ते, कौन से बिल्ली है। आपको नचाते रहते हैं अपना। अफसोस इस बात का उनके कहने में नाचता है। चलो अंदर की तो हम बात मान लेते हैं, उस बेचारे को इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इससे ज्यादा पढ़ाई तो नहीं होती दुनिया में। डॉक्टर इंजीनियर से बढ़ के कोई पढ़ाई नहीं है। बाकी सब पढ़ाइयाँ सेकेंड या IAS की, कोई भी हो, सबसे बड़ी पढ़ाई यही होती है जो प्रैक्टिकल पढ़ाई है, जो कुछ देती है दुनिया को, जो समाज को बनाती है। इंजीनियर समाज को बनाता है, डॉक्टर समाज की हेल्थ को संभालता है। इसके अलावा और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जो प्रोडक्टिव हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की पढ़ाई हो, किसी भी प्रोफेशन की हो, वो सब सपोर्ट है। लेकिन ये जो दो पढ़ाइयाँ हैं, इंजीनियर की और डॉक्टर की, ये दिमाग वाली पढ़ाई है, ये प्रोडक्शन वाली पढ़ाई है। ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, ये बताती हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये नहीं जान सकते तो दुख होता है मुझे आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री पे कि आपने घास काटी है वहां, और आपकी मेडिकल की डिग्री पे कि आपने वहां भी घास काटी है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि अगर आप अपने देश के बारे में नहीं सोचते तो आप कैसे इंजीनियर हो, आप कैसे डॉक्टर हो? आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, मेरा काम चलना चाहिए, मेरी सैलरी आनी चाहिए, धंधा चलना चाहिए, मेरी प्रैक्टिस चलनी चाहिए, मेरा नाम चलना चाहिए, इतने में रहेंगे आप। याद करो वो दिन जब गुलाम थे हमारे लोग अंग्रेजों। याद करो वो दिन कैसे बीतते होंगे आपके माता पिता होंगे, माता पिता पे। उस समय हम नहीं थे जब, क्या टॉर्चर सहते थे वो अंग्रेजों का, कभी सोचा है आपने? किस तरह डर के रहते थे वो उनसे, गोरों से, कभी सोचा आपने? नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि आपको वो संघर्ष करने का अवसर नहीं मिला। मैं अवसर इसलिए कह रहा हूं कि मैं संघर्ष को एक नियामत मानता हूं, संघर्ष को एक आशीर्वाद मानता हूं भगवान का, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष होना भी जरूरी है। बिना संघर्ष आप आगे नहीं निकल सकते।
आंच में तपना ही पड़ता है, आग में तभी आग अच्छा बनाती है आपको। आप तपे नहीं, आपको बनी बनाई खाने को मिल गई, आपको रहने को मकान मिल गया, अब आपको क्या, आराम से मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाए, पूरी भाई सुख शांति से रहना। मैं तो यह चाहता हूँ जी, सुख शांति से रहो मेरे बच्चे, यही चाहते हैं आप बस। वो भी किसी के बच्चे हैं कश्मीर में, वो सुख शांति से तो नहीं रह रहे, उनके बारे में नहीं सोचते आप। कमाल है। प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन अपने लिए सोचते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते, तो आपकी प्रार्थना भी बेकार है। एक तरफ अपना देश का हिस्सा मानते हो, अपने भाई बहन कहते हो उनको, और भाई बहनों का ये ट्रीटमेंट, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इतने मतलब खुद घर से हो, फिर कहते हो हमारे भाई है, हम वहां जाके रहेंगे। आप रहना चाहते हो वहां, आपको प्रेम की वैल्यू नहीं देना चाहते, फिर उन्हें आतंकवादी कह देते हो आप। वो आतंकवादी है, आतंकवादी आप भी हो, आप भी आतंकवादी हो, स्वार्थी हो आप, देश के लिए सोचते नहीं, अपने लिए सोचिए। आतंकवाद नहीं है। रिश्वत लेते हो आतंकवाद नहीं है, चोरी करते हो आतंकवाद नहीं है, किसे आतंकवाद कहते हो? राजनीति वाले झूठ बोल के वोट लेते हैं, क्या वो आतंकवादी नहीं है? हेरा फेरी करके ईवीएम से वो जीतते हैं, वो आतंकवादी नहीं है? क्या और क्या आतंकवादी होता है? एक प्रधानमंत्री 1 करोड़ लोगों को दबा देता है, एक 45-50 दिन तक, क्या वो आतंकवादी नहीं है? किसे आतंकवाद कहते हो आप? किसी को टॉर्चर करना, किसी को तंग करना, वो भी एक शांत आतंकवाद है। जरूरी नहीं कि बम चलाए जाए वो आतंकवाद होता है, गोली चलाई जाए वो आतंकवाद होता है, वही आतंकवाद नहीं होता। ये भी आतंकवाद है कि किसी को तंग किया जाए बिना मतलब, सजा और बात होती है। आपने कभी उनके बारे में सोचा तो आपके बारे में कौन सोचेगा? आप कह देंगे समाचार नहीं मिले, ये तो मैं नहीं मान सकता। आजकल समाचारों की कमी नहीं है, टीवी में नहीं है तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे नहीं है तो कहीं और है। आपको समाचार तो मिली नहीं तो फॉरेन एजेंसीज हैं, किसने रोका आपको? नहीं जाएंगे आप। मोदी 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 मोदी, 370 हटाया मोदी ने, कर्फ्यू लगाया मोदी ने, लोगों को मारा मोदी ने, ये गाने गवा लो कवियों से, गाते हैं, देखा है मैंने। हा 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 हा, मेरे मोदी ने हटाया। क्या है ये सब? अरे इतने दीवानगी पागलों की, एक इंसान के पीछे जो बेवकूफ बना रहा है तुम सबको, उसके पीछे इतना भाग रहे हो कि भाग में जाए, सब मर जाए। देश आपका है, याद रख लेना, पछताओगे भी आप। वैसे आप इस काबिल हो कि आपको अभी तो गुलाम रहना चाहिए था। गलती कर गया गांधी हमारा, गलती कर गया सारा सुभाष, गलती कर गया सारे लोग जिन्होंने आजादी में लड़ाई लड़ी, बेवकूफ बना गए, बेवकूफ बन गए। आप कर को आजाद कर गए, लेकिन आप आजादी के लायक हो नहीं। आपको गुलामी की ही झुगड़ियों में रहना चाहिए था, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप क्वालिफाइड हो। और सबसे ज्यादा मैं उनको कहता हूँ जो पढ़े लिखे होनहार विद्वान हैं, सबसे ज्यादा वो गलत हैं। अनपढ़ को छोड़ दो, उसको तो बेचारे को संविधान के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए कि संविधान कभी पढ़ा नहीं। आपने एनाटॉमी पढ़ ली, आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ ली, डिजाइन पढ़ लिया, बड़े बड़ी बिल्डिंग को डिजाइन कर लिया, फ्लाईओवर्स को डिजाइन कर लिया, बड़े बड़े ऑपरेशन आपने कर लिए मरीजों के, कैंसर के, हार्ट अटैक के, लेकिन आपने भारत के संविधान को देखने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि आप भारत को अपना समझते नहीं। यही रीजन है। आप भारत को समझते तो कभी 1-2 घंटे उस किताब को जरूर पढ़ लेते, जिससे आपका देश चल रहा है, जिससे आप डॉक्टर बने हैं, जिससे आप इंजीनियर बने हैं। क्योंकि संविधान नहीं होता तो ना आप डॉक्टर होते, ना आप इंजीनियर होते, याद रख लेना। शुक्र मनाओ उस कांग्रेस का, उस चेयरमैन कमेटी का, संविधान कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसने ये आपको दस्तावेज दिया, जिसके अंदर आपको राइट्स दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं। नहीं तो आपको अंग्रेज होता, काम कर, मार तो पीटूंगा, डंडे मार मार के काम कर रहा था, पैसे भी नहीं देता आपको। ऐसे इंजीनियर डॉक्टर होते। इंजीनियर तो बनने की नौबत ही नहीं आती, डॉक्टर बनने की नौबत नहीं आती, वो बनने भी नहीं देते आपको, क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे वो। उन्हें पता होता कि हमें छोड़ के भागना पड़ेगा, तो जो करके गए वो भी नहीं करते। खैर छोड़ो उन बातों से, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। आप बहुत खुश होते हैं कश्मीर हमारा हो गया, मुझे तो शर्म आती है बात सोचते हुए कि कोई अगर ऐसा कश्मीर हमारा हो गया, पहले नहीं था। अनपढ़ों गंवारों इन नेताओं की बातों में मत आओ, फिर कह रहा हूँ, अपना दिमाग लगाओ। अपना, अगर कश्मीर आपका नहीं था तो आपके पास रह कैसे रहा था? आप कश्मीर जा कैसे रहे थे? आप वहाँ अमरनाथ जाते थे, और कहीं जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, कैसे जाते थे आप? आपका नहीं था तो वो आप क्या वहां से वीजा लेके जाते थे? हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि आपको वीजा लेना पड़े, क्योंकि आपने कर्म कांड ऐसे कर दिए
आपका ये मोदी के द्वारा से हुए हैं। ह्यूमन राइट्स को दबाना, ह्यूमन राइट्स को तोड़ना दुनिया में बहुत बड़ा क्राइम है, आपको पता नहीं है शायद। फिर कानून वानून सब रखे रह जाते हैं। आपका 370, आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, आपका जेके का कानून और आपका भारत का कानून सब गए भाड़ में उस टाइम जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, क्योंकि आप इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हो। इसलिए ये सब क्राइम बहुत ऊंचे हैं, याद रखो। पूरा विश्व आपके खिलाफ खड़ा है आज की तारीख में, बोलेगा नहीं लेकिन सोच रहा है। आप खुश होते रहो कि मोदी ने जाके उसको पिटाई कर दी, पीछे कर दिया इमरान को, किसी ने किसी को पीछे नहीं किया, ड्रामेबाजी है। इमरान की वजह से ह्यूमन राइट्स नहीं है, ना ही मोदी की वजह से ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स ह्यूमन की वजह से, मानव अधिकार मानव की वजह से। आप अगर ह्यूमन राइट्स अपने देश में नहीं रखेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा वर्ल्ड फोरम से। यूएनओ भी बोल चुका है, एमनेस्टी भी बोल चुकी है, यूरोपियन यूनियन भी बोल चुकी है, अमेरिका भी बोल चुका है। कौन ऐसा है जो नहीं बोल चुका? ठीक है, उनकी आवाज में इतनी कड़कता नहीं है, इतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो टाइम दे रहे हैं आपको, समय दे रहे हैं आपको कि समझ जाओ। समय पहले देते हैं क्योंकि वो आपको एक अच्छा देश समझते थे, इसलिए। अगर छोटा मोटा समझते अब तक आके कब्जा कर लेते यूएन फोर्सेस। याद रख लेना, यूएन में भी पीस कीपिंग फोर्सेस होती है और वो समय आने वाला है अगर आप नहीं सुधरे तो। हटा दी जाएंगी आपकी फौजें वहां से, क्या समझते हो आप, अगर आप नहीं सुधरे तो। इसलिए अभी भी अवसर उन्होंने दिया है कि सुधार लो अपने आप को, नहीं तो ह्यूमन राइट्स इतना स्ट्रांग होता है कि इटाली जैसी कंट्री भी, फ्रांस जैसी कंट्री भी और दूसरी कंट्रियां भी इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। हो रहा है सामने, शिप के शिप भर के आते हैं अफ्रीका से, लीबिया के थ्रू से, उनको लेना पड़ता है, चाहे वेट करने के बाद लेना पड़े, लेना पड़ता है। कितने, 3 मिलियन या 3 करोड़ शायद सीरियंस लेबनान में बैठे हैं ह्यूमन राइट्स की वजह से। फिलिस्तीन लोग कहां कहां बैठे हैं दुनिया में, मालूम है आपको? अरे किस कंट्री में नहीं है वो जाके पूछिए, ह्यूमन राइट्स की वजह से। इस इसराइल हरामी ने उनके ह्यूमन राइट्स को खा गया और आज आप भी वही काम कर रहे हैं। आप इसराइल बन रहे हैं और कश्मीर को फिलिस्तीन बना रहे हैं। ठीक कर रहे हैं क्या आप ही ह्यूमन है, वो ह्यूमन नहीं, वो इंसान नहीं, आप ही इंसान है। ये कैसा कानून, ये कैसी सोच? क्या धर्म यही सिखाता है आपको? धर्म जो राम बताता है, जो कृष्ण बताता है, जो हरिश्चंद्र बताता है, जो त्रिदेव बताते हैं, जो देवियां बताती हैं, क्या वो यही धर्म है? क्या सीखा आपने धर्म में जिसको आप कहते हैं हिंदू है? हिंदू का मतलब नहीं जानते, हिंदू शब्द को मतलब समझते भी नहीं आप। धर्म यही नहीं सिखाता। एक तरफ तो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और पता नहीं किस किस की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं। अरे गाय तो दूध देती है सबको, गाय तो बहुत सारी बीमारी का इलाज भी देती है। गाय ने कभी गुस्सा तो नहीं किया, कभी किसी को मारा तो नहीं। वो तो कुत्ते की आवाज से भाग जाती है, कुत्ता बिना मतलब भौंकता है फिर भी गाय भागती ही बड़ी। गाय कुत्ते से डर नहीं जाती, वो कहती है छोड़ो क्या मैं इसके पीछे पड़ूं, सींग है चाहे तो मार भी सकती है उसको। लेकिन नहीं, आप फिर क्या, आपने क्या सीखा है धर्म में? मैं किसी धर्म को नहीं मानता, सच बता रहा हूं आपको, किसी फॉर्मली मैं नहीं मानता, लेकिन विश्वास करता हूं ईश्वर में, वो सबका एक है, मैं इतना मानता हूं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी धर्म से, क्योंकि धर्म को मैं लेके नहीं आया था अपने साथ और ना ही लेके जाऊंगा। अब कहते हैं खाली आते हैं, खाली आते हैं, तो धर्म भी नहीं लाते हैं ना लेके जाते हैं। तो सोच है अपनी अपनी, आप किसी को मानिए या मत मानिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपकी इच्छा है, आप हिंदू बनिए, मुसलमान बनिए, इंसान तो बनिए पहले। इंसान तो आप है नहीं। आपने देखा, मारो उसको पकड़ो, वो मोदी ने कर्फ्यू लगा दिया, बहुत अच्छा किया, वाह 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 वाह, मोदी 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 मोदी, मेरे मोदी ने कर्फ्यू लगाया। इसमें खुश होने की क्या बात है? आप अपने आप को सिचुएशन रख के देखिए, उस हालात में रख के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको मोदी अच्छा लगता है क्योंकि मोदी ने उनको दबा दिया, उनको पीट दिया। आप खुश हो रहे हैं दूसरे की पिटाई देख के, आपको पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं। कल को आपके साथ ऐसा होगा तो क्या कहेंगे आप?
बड़ा गुस्सा आएगा आपको फिर। इसलिए पहले सोच लो कि आप जो बकवास कर रहे हो और सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। अरे आपका देश का हिस्सा था वो आप कहते हो, आप उनके साथ खड़े तो हो, आप तो खड़े भी नहीं होते उनके साथ, आपको तो पता भी नहीं क्या। मैंने कुछ लोगों से बातें की ऐसे कहीं बाजार में किसी दुकान पे बात की उनसे, भाई वहां बहुत लोगों को तंग, अच्छा वो फारूक अब्दुल्ला को तंग किया जाए ऐसा बोला है क्या? अरे फारूक अब्दुल्ला का नहीं, पूरे के पूरे कर्फ्यू लगा हुआ है, 45 दिन हो चुके, लोगों को पता ही नहीं। कल ही की बात है, 45 दिन हो चुके हैं कर्फ्यू को, लोगों को बंदी बना के, ओपन जेल बना के, भारत के लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि ऐसा भी हो। अच्छा नजर बंद गया हुआ है उनको, तो ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पूछा भैया आपके साथ होगा तो क्या? अरे भाई मेरे पास है क्या? तो उनके पास क्या है? कोई सीरियस नहीं, कोई गंभीरता नहीं, होने दो यार, मरने दो, हमें क्या लेना देना है। जब देश के लोग ऐसे सोचने लगते हैं ना, तो या तो अंत आने वाला है या अच्छा नहीं होने वाला है, मैं इतना जानता हूं। अच्छा नहीं, अगर आप 1 करोड़ लोगों को तंग कर रहे हैं तो उनके नेगेटिव इफेक्ट तो आपको आएंगे ही आएंगे। उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं, जो उनके मन की भावनाएं गंदी आपके अगेंस्ट आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं तो काम करेंगे ही करेंगे। आपका इफेक्ट सबका होगा, खाली मोदी को ही नहीं होगा, क्योंकि आप मोदी का साथ दे रहे जो आपको नहीं देना चाहिए था। ठीक है आप 370 हटवाइए, उसमें साथ ही हम नहीं बह रहे, लेकिन इस इश्यू पे कि उनको बंदी बना के रख दिया जाए, खाने कमाने ना दिया जाए, रोटी ना दी जाए, दुकानें ना खुलने दी जाए, फौजें खड़ी कर दी जाए सारों तरफ, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इंसान को मारना है मन से, तन से और धन से। इसमें आपने उनका साथ दिया है उस गलत काम के लिए जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ उसने इसलिए किया कि एक कम्युनिटी को खुश कर सके, देखिए मैं इनके साथ कैसा ट्रीट कर रहा हूं और बस मुझे वोट दे देना। देखो ये भी ऐतिहासिक काम किया है मैंने, उसका ऐसा बोलने का ढंग है। ये मैंने ऐतिहासिक काम किया कि इनको बंद कर दिया, मुझे वोट दे देना, हाथ मेरे देश सेफ है। ऐसी बातें करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, मैं मोदी नहीं कहूंगा कि मोदी वाला कुछ नहीं उनके अंदर, लेकिन आप देश के मंत्री नहीं हो, आप देश के मालिक हो, मंत्री नहीं हो आप, मालिक हो। अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो मेरा हिसाब से आप ऊपर वाले के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप देशभक्त की मैं बात नहीं करूंगा कि आप देश के विरुद्ध काम करें, कि देश के विरुद्ध तो आप कर ही नहीं सकते। आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं जिनने ये सृष्टि बनाई, पूरी सृष्टि। भगवान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। याद रख लीजिए, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपने साथ उनका नहीं दिया, जो जरूरत थी उनको देने की नहीं दिया आपने उनका साथ। क्यों नहीं दिया, इसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा, आप दे भी नहीं सकते इसका जवाब। तो आप भी बराबर के भागी हैं, उसमें भुगतना आपको भी पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब पानी सर से निकल जाता है ना, फिर क्या होता है, कहते हैं जब तो पानी सर से निकल गया, आप ये बात बनने वाली नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त यहाँ भी आ जाए, फिर कहना अरे ये क्या हो गया, फिर आप मोदी को गाली देना शुरू कर देंगे। आपको हक नहीं है गाली देना का, याद रखना। अगर ऐसा कुछ हुआ, जिस तरह से पानी सर पे आके निकल जाता है हाथ से सब कुछ, अगर कश्मीर आपके हाथ से निकल गया ना, फिर आप जिम्मेदार हैं उसके, मोदी नहीं, बिल्कुल नहीं, याद रख लेना। आप जिम्मेदार हैं देश के, क्योंकि आपने मोदी को सपोर्ट किया, उछाला उसको बिना सोचे समझे, बिना जाने कि ये क्या हो रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, किसी की नहीं होगी। अगर इतनी बात आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा।